हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चैप्टर नंबर 1, 2 हो गए, अब चैप्टर 3 की बारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एक यूनिट था, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दैट वी हैव कंसिडर्ड चार्ज टू बी एट रेस्ट। अब चार्ज रेस्ट पे रहने वाले नहीं हैं, अब चार्ज को दौड़ाएंगे। When charges are in motion at the time current is constituted। मतलब क्या है, जब चार्ज रफ्तार में होंगे, मोशन में होंगे, तब क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 में मैंने करंट की बात इसलिए नहीं की क्योंकि तब चार्ज रेस्ट पे थे। अब चार्ज कहाँ पे रहने वाले? मोशन में। When charges are in motion at the time some amount of current is constituted। These currents occur naturally in many situations। नेचुरली भी करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग। इन लाइटनिंग करंट फ्लोज फ्रॉम क्लाउड टू द ग्राउंड थ्रू एटमॉस्फेयर। जब लाइटनिंग होती है, जब थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, तब क्या होता है? एट द टाइम करंट फ्लोज फ्रॉम क्लाउड टू द ग्राउंड थ्रू एटमॉस्फेयर। In lightning, when we consider average lightning, at that time 15 coulomb charge is transferred। 1 coulomb that is fairly large unit of electric charge। 1 coulomb चार्ज भी बहुत बड़ा होता है। तो जब एवरेज लाइटनिंग कंसीडर की जाए तब कितना चार्ज ट्रांसफर होता है? 15 coulomb। एंड व्हेन वी कंसिडर हैवी लाइटनिंग, एट दैट टाइम नियरली 300 coulomb चार्ज इज ट्रांसफर्ड। वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। Now we will understand electric current in detail। अब इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाते हैं। है क्या? चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। Here I have considered any arbitrary surface and amount of charge entering in this arbitrary surface is Q plus and Q minus। Amount of charge coming out from this arbitrary surface is also Q plus and Q minus। So some amount of charge is flowing। When charges are in motion at that time electric current is constituted। मतलब यहाँ पे कुछ हमको करंट मिलने वाला है। चलो देखते हैं कितना करंट मिलने वाला है। So net amount of charge flowing through this arbitrary surface is, कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q प्लस माइनस Q माइनस। मान लो ये 5 कूलम और ये कितना है? -2 कूलम। तो 5 - 2 3 कूलम। नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज 3 कूलम। दिस मच चार्ज इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस इन टाइम इंटरवल t। सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू this surface is directly proportional to time interval। Whenever we remove proportionality sign, we have to multiply some constant। So from this we can write I is equal to Q by T। What is this? I is called electric current। So formula of electric current, that is net amount of charge flowing through any cross section per unit time। Net amount of charge flown through the surface, that is Q, in time interval t। So charge upon time will give you electric current। This is the formula of steady electric current। This is the formula of steady electric current। What is called steady electric current? Steady electric current किसको बोलते हैं? When direction and magnitude of charge remain same, then that current is called steady electric current। When direction and magnitude of charge does not change, then that current is called steady electric current। What is the definition of electric current? Amount of charge flowing through any cross section area per unit time is called electric current। Amount of charge flowing through any cross section area per unit time
is called electric current. So this is the definition of electric current. It is not necessary that every time we will get steady current. Here I have shown one time scale. Suppose at time t, amount of charge passing through any cross sectional area is q. At time t, amount of charge flowing through any cross section area is q. And after some time, that is t plus delta t, amount of charge flowing through that cross section area is q plus delta q. So in time interval delta t, what amount of charge has flown through that cross section? इतने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन में से निकला? मान लो कि यहाँ पे मैं एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ. हियर आई एम कंसिडरिंग दिस क्रॉस सेक्शन and some amount of charge is flowing through this cross section. पहले टाइम t पे कितना चार्ज फ्लो हुआ? q. जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कुछ और चार्ज निकलेगा इसमें से, तो t प्लस डेल्टा t टाइम पे कितना चार्ज निकल चुका? q प्लस डेल्टा q. फॉर्मूला ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक करंट दैट इज डेल्टा q बाय डेल्टा t. This is the formula of average electric current. Now, if current is not steady, if amount of charge flowing through the cross sectional area varies with time, if the current is not steady at that time, we have to use this formula. Electric current I is equal to, here if we take this time interval to be very small, ये टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया जाए. If we take this time interval to be infinitesimally small, then this point will be near to this point. If I reduce the time interval, then this point will be near to this point. At that time, whatever amount of charge that has flown through the cross sectional area per unit time is called instantaneous electric current. I is equal to limit delta t tends to 0. If we take time interval to be very small, delta t tends to 0, then this delta q by delta t can be written as dq by dt. And this is the formula of instantaneous electric current. At any time t, if you want electric current, then you can use this formula I is equal to dq by dt. Formula of steady electric current I is equal to q by t. Average electric current delta q by delta t. Instantaneous current I is equal to dq by dt. Now what is the unit of electric current? From this formula, what is the unit of charge? Coulomb. What is the unit of time? Second. Coulomb per second, that is the unit of electric current. What is the SI unit? Total 7 fundamental quantities we have studied in standard 11. In SI system, total there are 7 fundamental physical quantities. And in that we have studied that SI unit of electric current is ampere. So this coulomb per second is nothing but ampere. Current in household appliances. करंट के बारे में जानकारी मिल गई. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड. अब देखते हैं कितना करंट फ्लो होता है. वट एवर हाउस होल्ड अप्लायंसेज वी आर यूजिंग, इन दैट करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज फ्यू एम्पियर्स, नियरली 5 एम्पियर. इतना अमाउंट का करंट फ्लो होता है. लाइटनिंग कैरीज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर. वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो in lightning, that is order of tens of thousands of amperes. Some fishes also produce electric current. There are several fishes, they produce electric current. For example, eelfish or catfish, in them current is of the order of ampere, that is nearly 1 ampere.
In human nervous system, current is of the order of microampere. In human nerve system, current is of the order of microampere. तो ये कुछ एग्जाम्पल है कितना कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है डिफरेंट सिस्टम में. सो दिस करंट्स कैन अकर नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग. आर्टिफिशियली ऑल्सो वी कैन हैव इलेक्ट्रिक करंट. When charge flows through any arbitrary surface, then amount of current flowing through that surface is charge upon time, that is electric current. Instantaneous current, that is dq by dt. When we take time interval very small, at the time we get electric current at particular time. When steady current we have, at that time we have to use I is equal to q by t. When variable amount of charge is flowing, if current is not steady, at the time we have to use this formula I is equal to dq by dt. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है अब वो देखेंगे. आओ देखते हैं फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट को समझने के लिए पहले फ्लो ऑफ वाटर को समझना पड़ेगा. सो हियर आई हैव टेकन वन faucet. When the faucet is closed, at that time no water will come out. Here some pressure is exerted from one end of the pipe, but no water is coming out when the tap is closed. The moment we open the tap, immediately water comes out, because already there is water inside the pipe. पाइप के अंदर पानी है, तो जैसे ही हम ये नल खोलेंगे तो इमीडिएटली पानी आएगा. सेम सिचुएशन, same thing happens in the flow of current. So what happens, the moment we switch on, there are plenty of free electrons inside the wire, conducting wire. So some force is exerted on them, and due to that some current is constituted. When charges are in motion, at that time current is constituted. So this way current flows. How is current created? Current is created ड्यू टू बोथ द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दोनों की वजह से करंट फ्लो हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से. हियर फॉर कंडक्टर्स, हाउ द करंट इज कंस्टिट्यूटेड इन कंडक्टर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर: सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम. ऑल द मेटल्स आर नथिंग बट कंडक्टर्स. Conductors easily conduct electricity. Why? Because atoms of conductors easily lose one or more electrons from outermost orbit with little energy. Metal, when we consider metal, then they have one or more valence electrons. At the cost of little energy, that electrons are released from the outermost orbit of the atom. These electrons are free to move within the bulk material. वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएंगे कंडक्टर में. Therefore, these electrons are called free electrons. These electrons are called free electrons. Even in static condition, that free electrons are in motion, but their motion is random. Randomly they are moving in any direction. Therefore, net velocity if we find, then that comes out to be 0. And in static condition, no current is constituted. When we connect any battery with the conductor, then current starts flowing. वो अभी हम देखने वाले हैं. Next, that is electrolyte. In conductors, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स हियर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर्स. व्हाट हैपन्स इन इलेक्ट्रोलाइट? दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. हियर आई हैव टेकन कॉमन सॉल्ट, दैट इज नथिंग बट NaCl. दैट इज आयोनिक कंपाउंड. NaCl ले सकते हैं, CuSO4 ले सकते हैं. फॉर Cu, Cu+2 SO4-2.
For Na, this sodium atom will lose the electron, so it will be converted into Na plus and electron. Chlorine has tendency to accept the electron, so Cl plus E minus, so Cl will be converted into Cl minus, so this is nothing but Na plus Cl minus. This is the electrolytic solution of NaCl. These are the two electrodes. This is called anode, this is called cathode. Anode is connected with positive terminal of the battery, cathode is connected with negative terminal of the battery. Now these ions Na plus and Cl minus will experience force. Na plus positive ion will experience force towards cathode, so Na plus will move toward cathode. Cl minus negative ion will move towards anode. This is connected to positive terminal, so it will attract negative ion Cl minus. This cathode is connected with negative terminal, so it will attract positive ion Na plus and Cl minus. Cl minus. Na plus and Cl minus, positive and negative charges both can move. What is the definition of electric current? Amount of charge flowing per unit time is called electric current. So here amount of charge, positive and negative, both the charges are in motion. So when we consider the example of electrolyte, at that time positive and negative both the charges are responsible for the flow of current. As I told you, how is current constituted? Current is constituted due to both the charges positive and negative. When we consider conductors, at that time current is constituted due to these free electrons, that is negatively charged particle. Due to negative charges current is constituted. When we consider electrolyte, at that time both positive and negative charges are in motion, therefore current is constituted due to positive and negative both the charges. Semiconductors. About semiconductors we are going to discuss in detail, but in part 2. Electrons and holes both are responsible for the flow of current. In the absence of electron, vacant position, that will behave as positive charge, and electrons and holes both are responsible for the flow of current in semiconductors. तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. इन कंडक्टर्स नेगेटिव चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. In semiconductors, electron and holes both are responsible for the flow of current. Electric currents in conductors. In this chapter mainly we have to study about conductors. Electrostatics. When we consider static situation, here I have taken one cylindrical conductor, and these ends of the cylindrical conductors are attached with two discs. First disc that is positively charged and second disc that is negatively charged. Due to this positive and negative charge, there will be some external electric field from positive to negative, and there are plenty of free electrons inside this conductor, large number of free electrons inside this conducting material. That free electrons will experience force in the direction opposite to electric field. So electrons will move to neutralize the charges. These electrons will move to neutralize the charges. As long as they are moving, will constitute an electric current. As long as they are moving, will constitute an electric current. जब तक ये मोशन में रहेंगे तब तक करंट फ्लो होगा. They will constitute some current. But this process is very fast. This is applied electric field, that is external electric field. But we know that in static condition, electric field inside the conductor is zero, because due to induced charges,
after losing electron, here there will be positive charges and here we will have negative charges. So some electric field is induced. Net electric field will become 0 inside the conductor in static condition. Hence, in this situation, there will be a current for a very short while. Current will be for short while, and no current thereafter. उसके बाद कोई करंट रहेगा नहीं. जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है वो थोड़ी देर तक तुम्हें करंट मिलेगा. बट दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट. इमीडिएटली within very short interval of time, electric field inside the conductor will become 0 and there won't be any current thereafter. So in static condition, electric field inside the conductor is 0. But the situation will be different when we consider dynamic condition. Which condition? Dynamic condition. If we have some closed path, then electric field inside the conductor will not become 0. Now next we have to study about dynamic condition. This is static condition. Now we will study about dynamic condition. Static condition हमने देख ली. अब dynamic condition की बात करते हैं. What happens in dynamic condition? When conductor is connected with some closed loop. Here if we consider some closed loop, this end of the conductor is connected with positive terminal of the battery. This end is connected with negative terminal of the battery through this wire. This long line indicates positive terminal of the battery. This short line indicates negative terminal of the battery. So this end will be at higher potential and this end will be at lower potential. So direction of electric field will be from higher potential to lower potential, positive to negative. This is the direction of electric field. We know that electrons will experience force in the direction opposite to electric field. यहाँ पे जो स्टैटिक कंडीशन में हो रहा था वैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली नहीं है. पहले क्या होता था? दिस एंड ऑफ द कंडक्टर loses the electron and becomes positively charged, and here negatively charged electrons accumulate. But here electrons will not accumulate on this surface of the conductor. They will be continuously in motion. These electrons will reach to the battery. Battery will supply some energy and again they will come back to this end. Therefore there won't be any induced electric field. अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने वाली नहीं है. तो अगर कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होने वाली नहीं है. हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो. एज आई टोल्ड यू, इन डायनेमिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल नॉट बी जीरो, while in static condition electric field inside the conductor will become zero. So we can say that in this case there will be a steady electric field. There will be a steady electric field because we have connected some source of energy, that is battery. When we connect battery or cell at that time, there will be steady electric field. This will result in a continuous current rather than a current for a short period of time. Now we will get current for a long interval of time. Continuous current we will get. Now what should be the direction of electric current? Direction of electric current is always in the direction of positive charge. Is always in the direction of positive charge. Or we can say direction of current is in the direction opposite to the motion of electrons. तो electrons किस तरफ जा रहे हैं? Towards left. Therefore the direction of electric current will be in this direction. Through this wire current will flow in this direction. Current will be in this direction. So in the direction opposite to the motion of electrons. Electrons are moving in this direction, current will be in this direction, towards right. Electrons are moving towards left, current will be towards right.
करंट हैज़ अ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ डायरेक्शन, तो करंट के पास डायरेक्शन तो है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्या वो स्केलर है या वेक्टर है? तो आप बोलोगे सर वेक्टर होनी चाहिए, करंट के पास डायरेक्शन है। देखते हैं, सपोज यहाँ से कुछ करंट आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, एंड हियर द एंगल आई एम टेकिंग 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस वायर, थ्रू दिस कंडक्टर व्हाट विल बी द करंट? यहाँ से करंट कितना मिले? 3 एम्पियर 2 एम्पियर, करंट विल बी 5 एम्पियर। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं करना है, 3 + 2 5, what amount of current will flow? 5 ampere. So you can see that current has a direction but it does not follow vector laws. वेक्टर लॉ को फॉलो करने वाला नहीं है, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ? इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस 2 एम्पियर करंट, सपोज करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन 3 एम्पियर 2 एम्पियर, देन व्हाट विल बी द करंट फ्रॉम दिस वायर? अब यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा? आया कितना? 3 एम्पियर, गया कितना? 2 एम्पियर, तो यहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा होगा? 1 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट आया, या इस वायर में से कितना गया? 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर, करेक्ट। सो इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन देन करंट चेंजेस, बट this electric current we can find using scalar law, scalar addition rule. Therefore electric current is a scalar quantity. कैसी quantity है? Electric current that is scalar quantity. If any physical quantity has a direction but does not follow vector laws, then that physical quantity is actually called tensor quantity. क्या बोला जाता है? Tensor quantity. But if in option tensor quantity is not given, then we have to select scalar quantity. Electric current is a scalar quantity because it does not follow vector rules. वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है तो वेक्टर तो नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं है ऑप्शन में तो क्या सिलेक्ट करेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर आपको क्लियर हो गया। स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, बट इन डायनेमिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल नॉट बी जीरो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज में इस तरफ कंसिडर कर सकता हूँ। सो इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू टेक इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, opposite to the motion of negative charges. Electric current has a direction, but electric current is a scalar quantity. So today we have studied about electric current. Next time we will study about electric current density. और आगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएगा ओम्स लॉ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I hope the basic concept of electric current is now clear to you. So I am stopping here. Next time we will continue with this chapter, current electricity. Thank you.